स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश क्लास में वी विल स्टडी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. चलिए लेट्स स्टार्ट. Open your books and just let's start reading it. Rita stitched the dress. The dress was stitched by Rita. The boy repaired the cycle. The cycle was repaired by the boy. The animals broke the fence. The fence was broken by the animals. Now, what does it say? Each pair of sentences describe the same activities, but the sentences in the pair are different. दोनों sentences से meaning एक ही निकल रहा है, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग अलग है. जैसे the subjects of the sentences in blue are Rita, boy, animals. लेकिन जैसे कि Rita और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या था, बॉय, और थर्ड सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट हमारा एनिमल था. और सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस इन रेड आर जैसे ड्रेस, साइकिल एंड फेंस. ओके, द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर द डोर्स ऑफ द एक्शंस. द सब्जेक्ट इज एक्टिव. अब जब हमने कहा था रीटा स्टिच द ड्रेस, तो वो क्या था, वो एक्टिव था, अभी हुआ. रीटा स्टिच द ड्रेस. और जब हमने कहा द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन रेड which says the dress was stitched by Rita, stitched in red are in the receivers of the action. उन्होंने action को receive किया. ठीक है, so the subject is passive. जब हम कुछ receive करते हैं वो passive होता है. जब हम कुछ action को देते हैं that is active. तो अभी जैसे उसी वक्त हुआ तो उसने कहा Rita stitched the dress. ठीक है, और जब passive में बोलेंगे तो वो क्या होगा, the dress was stitched by Rita. भाई रीटा ने वो ड्रेस स्टिच की थी. The subjects of the sentences in red are the receivers of the action. The subject is passive. When the subject of a sentence is the doer of the action, the verb used in the active voice. When the subject is the receiver or recipient of the action, the verb used is in the passive voice. और जब भी सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर या रिसिपिएंट का होता है, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो कैसे यूज होता है, पैसिव वॉइस में. रिसीवर मतलब जो उसे लेता है, बोलता है. Why? How to change voice? While changing the sentence into passive voice, keep the following points in mind. अब जब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. फॉर रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए, द एक्शन इन द पैसिव वॉइस डज नॉट पास ऑन टू द ऑब्जेक्ट, इट रिमेन्स विद द सब्जेक्ट. अब जो इसमें एक्शन होता है ना जब रिक्वेस्ट में, वो वही रहता है, वो आगे पास ऑन नहीं किया जाता. तो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेंसिल. ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या था, प्लीज गिव मी अ पेंसिल. और जब उसने उसको पैसिव वॉइस में बोला तो कैसे बोला, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेंसिल. और जब कमांड्स देते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, चलिए लेट्स राइट डाउन. अब उसने कहा प्लीज गिव मी अ पेंसिल, है ना. और जब हम, ये हमारा किस वॉइस में है, ये हमारा है एक्टिव वॉइस में. और जब हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेंसिल, यू आर requested to give me a pencil.
और ये किस में लिखेंगे हम? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये सारी हमारी है रिक्वेस्ट्स। अब जब हम कमांड देंगे तो कमांड कैसे लिखेंगे? कमांड हमने लिखने कमांड। कमांड मतलब किसी को ऑर्डर देना है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो कैसे देते हैं? कमांड में लेट इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। इसमें क्या यूज करते हैं? लेट। अब वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल keep the book. So now what we will do, we will study about command. Now what is a command? बेटे कमांड वो होता है जब मैं कोई चीज के लिए आपको ऑर्डर करती हूँ। मैंने किसी चीज के लिए आपको ऑर्डर किया, वो क्या हुआ? वो हुआ कमांड। जैसे let is used in the passive voice. let को कहाँ यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में। keep the book, अब उसने कहा keep the book, उसने एक ऑर्डर दिया keep the book। ये एक्टिव वॉइस है ना? उसने उसी वक्त एक्टिवली बोला, तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस keep the book। और जब let the book be kept by you, ये क्या है? ये हुआ पैसिव वॉइस। let the book be kept by you, kept by you, ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस, पैसिव। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑर्डर देना है किसी को, कमांड करना। अब दूसरा क्या आता है? क्वेश्चंस, फॉर क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस, the passive voice in questions will also be in a question form। इसमें क्या होती है? पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन फॉर्म में हो जाती है। जैसे are my words encouraging you? are my words encouraging you? encouraging you, question mark, है ना? This is what? This is active. Now when I will say in passive, it will be are you being encouraged by my words? Are you being encouraged by my words? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ये क्या है? क्वेश्चन में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा। ऐसे आपने ये चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, वी मेक फ्यू चेंजेस। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या है? The object in the active voice becomes the subject in the passive voice। अब जो ऑब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस में, वो जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। The verb changes into the be plus past participle from the verb। अब verb क्या होता है? वो past participle बन जाता है जब वो verb form में यूज होता है। इसमें The meaning of the sentence does not change, लेकिन मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम ही होता है। The subject in the passive voice becomes by plus the doer of the action। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, वो क्या बन जाता है? वो हमारा एक एक्शन फॉर्म बन जाता है, doer of an action form। The tense does not change in passive voice, और टेंसेस नहीं चेंज होते पैसिव वॉइस में। The mouse disturbed the dog, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। The dog was disturbed by the mouse। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? The dog was disturbed, past participle हो गया। By the mouse क्या हुआ? By doer हो गया। ठीक है, A few examples of changes in different tenses forms are given below। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डिस्टर्ब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज डिस्टर्ब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। Is disturbing present continuous, is being disturbed वो भी present continuous। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस।
Now the first exercise says put an A against the sentences that are active voice and a P against those in the passive voice. अब जो तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे A, और जो पैसिव वॉइस के उनके आगे लगाएंगे P. चलिए, The man drove the car. A का फर्स्ट वन, The man drove the car. ये आपको क्या लग रहा है, एक्टिव है या पैसिव है? ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है. तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, A. Now the second one, the plants were watered by the old lady. The old lady watered the plants होता तो वो क्या था, एक्टिव वॉइस. अभी ये क्या कह रहा है, the plants were watered by the old lady. तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस. ठीक है. चलिए, थर्ड इज he threw the paper in the dustbin. He threw the paper in the dustbin. ये भी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस. Now the fourth one is the telephone wires have been cut by him. टेलीफोन वायर्स क्या की गई हैं, कट बाय हिम, काट दी गई हैं. तो ये क्या आएगा, पैसिव वॉइस. नंबर 5 इज he showed a beautiful painting. He showed a beautiful painting. ये तो एक्टिव वॉइस में है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नंबर 5 में, A. और नंबर 6 कहता है the cake was eaten by the girl. The cake was eaten by the girl. तो ये हमारा क्या हुआ, पैसिव वॉइस. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी. ये आप प्रैक्टिस कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. सो प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज B. Exercise B. Exercise B says fill in the blanks to complete the sentences. Then write whether they are in the active or passive voice. पहले तो इनको हमने जो बॉक्स में वर्ड्स लिखे हैं वो डालकर उन्हें फिल करना है. फिर हमने इसमें ये भी बताना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. चलिए, फर्स्ट वन इज द बॉय डैश द ग्लास. द बॉय, अब हम बॉक्स में देखेंगे क्या आएगा इसमें, क्लीन, डेकोरेटेड, ब्रोक. ओके, The boy broke the glass आएगा इसका. फर्स्ट का आप लिखेंगे आंसर, the boy broke the glass. Broke the glass. The boy broke the glass. और ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस. A लिखेंगे इसके आगे हम, A. ठीक है. Now the second one says the ball dashed by Rohit. The ball, okay, the ball was thrown by Rohit. ये हमारा क्या आ गया, पैसिव वॉइस. ठीक है. द बॉल वॉज थ्रोन बाय रोहित. नेक्स्ट इज द पार्क. थर्ड वन इज द पार्क. The park, okay, was cleaned by children. Was cleaned by children. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, द बॉय पार्क वॉज क्लीन बाय चिल्ड्रन. ये हमारा आ गया पैसिव वॉइस. ठीक है. नाउ द फोर्थ वन, इट सेज वी डैश द टिकट्स. वी डैश द टिकट्स. तो ये इसमें हम क्या लिखेंगे, फोर्थ में हमने टिकट्स खरीदी है ना, तो वी बॉट द टिकट्स. बॉट द टिकट्स. हमने टिकट्स खरीदी है ना, we bought the tickets. तो ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस. Now fifth one says the room dash by me. The room was decorated by me. Decorated by me. The room was decorated by me. ये हमारा आ गया पैसिव वॉइस. ठीक है.
Now the sixth one. What does the sixth one says? Reena dashed the door. Reena opened the door. Opened the door. ये हमारा आया active voice. Now the seventh is dash sit on the chair. इसका आएगा हमारा please sit on the chair. Sit on the chair. Active voice. Please sit on the chair. ठीक है, active voice. So this way you will complete this exercise. It's a very easy one, है ना? ये आपसे complete हो जाएगी. इसको complete कीजिएगा. चलिए अब हम आगे चलेंगे exercise C पे. I would request cats do as much practice they can and try to talk to them in English in their this class, so that it becomes a habit for them to talk in English. So let's start with exercise C. Exercise C. First question. What does it say? Change the following sentences into passive voice. अब हमने क्या करना है? ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस दिए, इनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. जैसे the boys are flying kites. So इसका हम पैसिव में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? Kites are being flown by boys, है ना? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट वाले में kites are being flown. Kites are being flown by the boys. है ना? By the boys. Full stop. Now the second one. Second one क्या कह रहा है? Second one कहता है Sheena helps her mother. So इसमें क्या लिखेंगे? Sheena helped her mother को mother is helped by Sheena. Helped by Sheena. ठीक है? Now the third one, mother is helped by Sheena. Now the third one says he scored a century. उसने century मारी, है ना? तो हम इसको कैसे करेंगे? पैसिव में a century was scored by him. Was scored by him. The century was scored by him, है ना? Now ये fourth वाले में क्या लिखेंगे हम? They organized a tea party. Okay. A tea party was organized by them. Was organized by them. Full stop. Now the fifth one says Roma will arrange the cupboard. Okay. तो इसका हो जाएगा the cupboard will be arranged by Roma. ठीक है? Now the sixth one says Neha wished Annie on her success.
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Annie was wished by Neha on her success. ठीक है, तो आप एक्सरसाइज सी ऐसे कंप्लीट करेंगे और जहां आपको समझ नहीं आएगा जस्ट आस्क योर कैट्स आउट देयर so that they can help you to understand and write the answers in a proper way. Fine. And checking कैसे करनी है, हमने एक दूसरे को कॉपीज दे देंगे और एक दूसरे मिलके अपनी गलतियां निकालेंगे एक दूसरे की और उसको चेक करेंगे पेंसिल से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी है ना. तो एक्सरसाइज डी हमें क्या बता रही है, चलिए एक्सरसाइज डी कहती है ओके, पहले हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था, अब हमें किस में चेंज करना है, we'll have to change them in active voice. Change the following into active voice. Now how will we do that? The first question says the dress was brought by my grandmother. Now how will I write in an active voice? Try, come on. I will write my grandmother bought the dress. ये किस में लिखेंगे हम, एक्टिव वॉइस में, है ना, ऐसे लिखेंगे हम एक्टिव वॉइस में. The prizes are distributed by the chief guests. तो इसको कैसे लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, the chief guest distributed the prizes, है ना. The chief guest distributed the prizes. ठीक है, चलिए थर्ड वन इज the song will be sung by Rita. तो इसको कैसे करेंगे, Rita will sing the song, है ना. ये क्या बन गया हमारा एक्टिव वॉइस में. Now the fourth one is a letter is being written by her. वो एक चिट्ठी लिख रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, she is writing a letter. है ना. Now the fifth one says the furniture is being made by the carpenter. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, the carpenter is making the furniture. Making the furniture. ठीक है. अब लास्ट वन इज dinner is being cooked by mother. तो इसको कैसे लिखेंगे, dinner is being cooked by mother. Mother is cooking the dinner. Mother is cooking the dinner. Fine. So this way you are going to complete the whole exercises. Wherever you face problem, ask your teachers out there. They are there to help you out. Again and again ask questions and try to understand the exercise in a proper way. Fine? ठीक है? So ये exercises आपको complete करनी है. Take care. Okay. Bye.